was suggested by one of the staff members here, is incredible journey of life sciences. I'm picking up life sciences, but I may not talk about life sciences at all, because I take each one of you as a scientist, persona grata, that you are basically a scientist. And I take you into the history, which is one of the aims of this 1 week, 75th years of celebration. When you were reciting DAV anthem, it took me back to DAV College, Amritsar, where I used to study 55 years back. In fact, there were little tears in my eyes because the same recitation was going, which was so inspiring at that time. Later on, in the University of Canada, we from DAV College, 24 in number, used to recite this particular hymn, sort of a thing, and remember our DAV College days, then shifting. My history itself says that I come from the University of Cambridge, London for the last 16 years. 2 years gap is that of the corona pandemic, which has taught us so many things. In fact, I'll tell you at the end that science is more appreciated because of corona rather than anything else. And this has been one of the biggest tools to reach out to the young minds to appreciate life with the science. It will be a part of the story. My lecture will be 5-6 stories, as one of the madam said. I will stitch up, मैं एक स्वेटर बना दूंगा, छोटा छोटा करके, every year after year, for the last, now 122 years, 121 years completed. On 10th of December, which happens to be the death anniversary of one gentleman whose name was Alfred Nobel. He was born in Sweden. That is why the Nobel Prizes are given in University of Stockholm, Sweden. Total 6 Nobel Prizes are given at this time. 5 are given in Stockholm University and 1 is given in the Oslo University of Norway. Forget that part. This is the gentleman who in 1896, when he died, wrote a 2-page will. उसने अपनी will लिखी, 2 पेज की, in which he wrote beautiful definition of science. Definition of science. This is Alfred Nobel. 1833 born, 21st of October, died on 10th of December 1896. And he said, in that 2-page, he said, science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. Each one of you, if has an analytical thinking before everything does, science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. And the prime purpose of science is not to change the universe. I don't want the moon to come down. I don't want the Mars to change its orbit. The prime purpose of science is not to change the universe, but to get the answers about, to get the basic answers about ourselves. Second, and to make it as a boon for the society through technology. मेरी बात समझे? Science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. And अगर मुझे ये पता चल जाए सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, IS दुआ कौन है, मैडम नीलम कौन, अपने आप सोचे कौन, हरप्रीत सोचे मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नाम याद है, कुछ मैं ऐड करता जाऊँगा धीरे धीरे. ओके. और सेकंड है कि क्या मैं इस साइंस को what will happen, Diticron, okay? But all things must change to something new, to something strange. All things must change. ये उनके कॉलेज लाइकन स्कूल के बाद Athens is the capital of the Greece. वहाँ लिख के लगा है. This is happening around 2300 years back. One of the biggest changes which took place in the man's mind, in the mind of the man, was that 1543 a student came onto the stage. एक स्टेज पे एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था लाइकम.
लाइकन आके कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय टीचर whose name was Copernicus, he has died this year. उसी साल उसकी डेथ हुई है कॉपरनिकस की। उसके पास एक किताब है जिसका नाम है सिंशिया हॉर्टिकल्चरा, और उसमें ही प्रूव्स that this word is heliocentric. That means सन जो है एक सेंटर है और इसके आसपास 5 प्लैनेट घूम रहे हैं। द हीलियो मीन्स इन लैटिन मीन्स सन, SUN, SON वाला नहीं, इंडिया में SON वाला ही है, लेकिन SUN वाला, सन सेंट्रिक हीलियोस। दिस इज कॉपरनिकस एंड लॉचन उसका स्टूडेंट है, और वो कहता, but later on 300 years following this and this, they showed that the planets are not 5, sun remains the center as its distance from the sun. At present there are 9 planets, which are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Pluto goes down in 1992, and now 8 planets are revolving. If you visit capital of United States of America, USA, there is a office of NASA, और नासा के ऑफिस में LED लाइट्स के साथ 8 के 8 प्लैनेट 24 घंटे 360 खुलता है। इस दरवाजे से खुलता है, इस दरवाजे से एंटर करता है। देखिए ये दरवाजा खुलता है, वो कहता है दिस इज 28 अप्रैल 1953, बहुत सर्दी है, कहता है हुर्रा, we have discovered the secret of life. 70 years back, hurrah, we have discovered the secret of life. ये about 26 लोग बैठे हैं, उसके पास भाग के जाते हैं, कहते हैं भैया कल तेरा पेपर पब्लिश हुआ है और तू कहता है कि हमने सीक्रेट ऑफ लाइफ देख लिया, एक सेल के अंदर क्या लाइफ होती है। कहते हैं यस 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 यस। बच्चों बिलीव नहीं करिए, बिलीव करिए इस बात को कि 28 years old man in the company of a 21 years old man get the Nobel Prize in 1962. Watson and this Crick entering this place, ये उनकी पिक्चर है, ये उनकी We have discovered the secret of life, तो मैं बोल गया। This is Watson, America. This is the one who enters the hall and saying, we have got the secret of life. ये पिक्चर रात को मैंने निकाली आप लोगों के लिए, ये दिखाने के लिए कि इसका काम करने वाली ये लेडी भी थी जिसने बहुत फोटो ली थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन, लेकिन ये 1958 में इसकी डेथ हो गई। नोबेल प्राइज हमेशा जिंदा आदमी को मिलता है, जो डिजीज हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको नहीं मिलता। शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज शी एक्सपोज सो मेनी पिक्चर्स ऑफ द DNA मॉडल्स। कि इसकी ये पिक्चर बड़ी क्लासिक है, इसकी ओरिजिन ये पिक्चर है जिसका नाम है पिक्चर नंबर 51, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने ध्यान से स्टडी करके कहा कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है DNA का। और ये बच्चों थोड़ा लेक्चर के बाद हरप्रीत तो बना, बाकी मैडम्स के साथ भी बात करता हूँ, ये दोनों आदमी वाटसन एंड क्रिक फिलोसफर बन गए। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिलोसफर। फिलोसफर का क्या मतलब था, मैंने बोला था शुरू में, बोल बेटिया, लव फॉर द विजडम। आप ही हमेशा हर चीज में से सच्चाई ढूंढो, लव फॉर द विजडम। अपने इसको यूज करो जो 880 ग्राम आपके अंदर भगवान ने दिया हुआ है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये आदमी सोचते हैं, कहते हैं ये जो खास करके क्रिक, ये क्रिक बड़ा है उससे 5 साल, 2005 में डेथ हुई इसकी। कहता फ्रांसिस एंड आई वर रनिंग अगेंस्ट गॉड। वाटसन लिखता है, मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशन बोलता हूँ, कहता है पंजाबी ट्रांसलेशन, मैं और फ्रांसिस स्टार्टेड रनिंग, हम साइंस के रास्ते पे चल पड़े। हमने हमेशा सोचा कि लाइफ क्या है। हमें पुरानी बातें जो कि मेरे फादर्स, फोर फादर्स और किसी पड़ोसियों ने बताई थी, बेसिकली वो चर्च के ऊपर लाइन कस रहा है, वो हमें अच्छी नहीं लगती थी। हमने जब भी अपने ग्रैंडसन दादाजी से पूछा या नाना जी से पूछा कि दादाजी मैं कहाँ से आया हूँ, तो उन्होंने कहा, हमेशा यही कहा कि एक एनिमल, एक बर्ड है, ये वाटसन एंड क्रिक है, एक बर्ड है जो इसका नाम स्टॉक है, STOCK, बतख। वो आई, उसने अपने आप को अपने एक
चद्दर में डाला हुआ था तुम्हें और आपके पापा के घर के आगे रख दिया। पापा ने दरवाजा खोला, कहा ओह गॉड यू हैव ब्लेस्ड मी विद द सन और यू हैव ब्लेस्ड मी विद दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड ब्रॉट टू अस बाय स्टॉक। कहता हमें इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, हम चाहते थे कि ये पता करें कि मैं कहाँ से आया हूँ, और इसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते डीएनए को गोली मारो इस समय, हमें इस साइंस को पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला कि सारा कुछ एक लाइफ एक जीन के थ्रू चलती है। ये देखिए ये कहता है कि ये तो जो मैं ट्रांसलेट कर गया, और कहता है कि हम कैसे आए, देखिए थोड़ा स्माइल कीजिए, हंसीए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। कहता है ये ऐसे आया कि ये बर्ड स्टॉक ला रहा है और आपके पापा या दादा के घर के आगे रख के आंगन में रख के स्पेशली ऑन 25 ऑफ दिसंबर क्रिसमस डे के अगले दिन रख के जाता था, और अंदर जाके कहा हे एल्बर्ट इज बॉर्न, हे कृष्णा is a scientist within all of you and all of us. Science and technology, they are going to be the basis of many of the solutions for the social problems. And as Sir has already said, that science, the purpose of the science is to make it a boon through the technology and for the welfare of the society. So surely we will get so many scientists from these are the budding scientists. They will develop some technologies that will bring out some solutions to the social problems. Now I would like to request Madam Principal to please encourage with your motivation. But mesmerizing is the word, that describes the entire 1.5 or 2 hours talk, Mesmerizing, mesmerizing and mesmerizing. Not only in content, sir, as always, but in your presentation also. And the most important thing, that I would like to share with my students here is the humbleness with it. Zameen de naal jude और जुड़े रहन दी एक ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਕਨ ਫॉर ਅਸ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਹਿਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। Look at the level, look at the ocean of knowledge he has. Look at the ocean of knowledge he has. और आज ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੂਆਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is going to be your capability, your capacity. ਔਰ ਵੂਮਨ empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ with due apologies from male counterparts ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। That is the reason I always say कि biologically भी तुसी ज़्यादा strong हो, emotionally भी तुसी ज़्यादा strong हो, और इसे करके multitasking तुसी सब तो वधिया तरीके दे नाल कर सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। So let us take a pledge, in this seminar hall today, कि आज तो बाद असी किसी भी जीव नू जदों देखांगे तां असी यही महसूस करके साडा एक्शन रिएक्शन होएगा कि मेरा एक अंश ऐस जीव दे विच है। And look at the change, you will feel in your personality. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕਦੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। isn't it right? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਡ indebted to you. You are an important part of Hansraj Mehla Mahavidyalaya family, and it is a moment of proud for us ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ elevated ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you for always being here. Thank you, ma'am, for the motivation words. And after the sir's lecture, I again believe in those words of Einstein that the more I study science, the more I believe in God. Yeah, I agree. Yes. It is the same. But that God lies in the diversity of the life. Yes, sir. Never think that there is some
wonderful experience, well organized, and certainly people from the various backgrounds, they have come and they have joined and they are participating, they are learning. My student from David, they have come, they have participated and they are learning a lot, and this is very, very important for the spread of sciences. So hopefully that will bring some new ideas among the students for the coming futures, and hopefully they will be learning a lot, because under the guidance of Ma'am Shal Ma'am and Principal Ma'am, wonderfully they have organized, and we all as a faculty, we are also experiencing, and certainly we will try to spread this awareness amongst our students as well. Thank you so much.
Thank you all. Thank you very much. And I feel very happy in telling you, it is my delight to tell you that this program is being streamed live on YouTube, and many students who are far away, they can watch, they can listen to the opinions shared here by the panel. And now, Hansraj Mahila Mahavidyalaya was a pioneer college in district Jalandhar to be starting the practice of green greetings. We discarded the bouquets so that plastic is completely, done away with. It is our continuous effort to be doing away with the plastic. And now I request Principal Dr. Ajay Sabeen to present green greetings virtual to our presiding guest, Dr. Garima Gupta. Ma'am, these are the seeds, and we will send the seeds to you so that you plant them, and let us all make the planet a little more greener, a little more pleasant. Thank you all. Thank you very much. Thank you. And now I feel very happy in inviting our respected, she is the inspiration and the blood and soul of our college. Under her guidance, under her leadership, HMV has been, it has been granted the NAC A++. Researchers par excellence, and this will be our homage, this will be our contribution towards the progress of our country. So not taking much time, because ma'am also has a long day ahead. I once again welcome you, ma'am, in the premises of Hansraj Mahila Mahavidyalaya. Looking forward to your visit in the campus very soon as promised. And thank you is a small word, ma'am, for all the positivity, all the support, all the concern that you have for our institution. Thank you, and thank you, ma'am. Thank you, Principal Ma'am. Thank you so much. And really, it is a very happy day for all of us, a very positive day, and a day, with stars in our eyes, because we have the star herself amongst us. And I usually say this couplet, because she is a star, तो मुझे यही याद आ रहा है कि गरिमा मैम, सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी हमारे इम्तिहान और भी हैं, आप शाहीन हैं, परवाज़ है काम आपका, अभी आपके इम्तिहान और भी हैं, और इस जहां में आपके आसमान और भी हैं. So we wish that you shine like the star, and we wish that you lend your shine to so many others, especially. I can surpass any object, and this celebration of myself gives me happiness. It might not be giving you happiness, but then I don't care. I want to be happy. That's the only thing that matters to me. That's the only right I have. The Constitution might say you have so many other rights, but the only right or the only aim that you come up with is I want to be happy. No matter you talk from any any religion's point of view, any action that you undertake, why you do it, that makes you happy. So out of all the primary, all the emotions that we have in human minds, is the only emotions that on which you have controls. Others depend on other factors. Getting? शादी करना था, ऐश्वर्या ने हाँ बोल दिया, excitement, not happiness. पर जिससे प्यार किया उससे शादी की, happiness. जिसको पसंद किया उससे नीचे मिली. But then only emotion is when you set your targets and you achieve it. That's the only emotion that you have control over. Otherwise, excitement is there. आपने सोचा था कि 70% रखोगे, लेकिन 90 आ गया. घर में मिठाई. But 70 सोचा, 70 मिला, fine. 70 सोचा था, 50 मिला. घर वाले बाकी सारे के सारे गधे. Rigged elections, rigged examinations, isn't it? The only emotions which
actually gives you the power to control, it's something which is dependent on you. And that's the only reason, that's the only reason you say, that's my birthright. What you set for, this guy set 8848, he got it, he was happy. He doesn't give a damn whether whether others are, given food or not. He's not concerned about it. You take a photograph, that's completely fine. You don't take a photograph, that's completely fine. Still I would go and climb the mountain. Because that's something which gives me happiness. Instagram में सिर्फ dance करने वाले मिलते हैं, but then nobody is actually into method acting. तो वो आप कर सकते हो. There is a huge dearth of that. You can open restaurants. You don't, everybody is for Subway, everybody is for McD. There is no Punjabi brand. You can always start that as an experiment. By the way, there is a hotel in Spain called as El Bui. That's a very famous hotel, by the way, and it's very famous in the sense why 20 lakh people applied to have a dinner in El Bui. That's more than IITians. 10 lakh people apply in IITs. 20 lakh apply at El Bui. So 8,000 are selected, random selection. Again, difficult to to get a chance to have a dinner at El Bui. Easier to get a chance to read in Harvard Business School. And the cost is not that high. But then why it is so famous? Because the product that you are going to eat, it never existed before and it's never going to exist after that. The product is named after you. The product, will never be made in that restaurant again. तो अपना छाप छोड़ने के लिए everybody is कि भाई हवा अड़ गया भाड़ में. El Bui is the answer. And also, since it's it actually changes the whole concept of marriage. The moment